So good evening, everyone. And today we will discuss about drug de-addiction actually. And wait 1 minute. Let me start this one. Okay, so today we'll talk about drug de-addiction. So whatever queries you have, you can even ask in between. There is no restriction. You should wait for. You have to wait for a long, like till the end. So today we'll talk about two, three things basically. What is drug addiction and how it starts and how we can deal with it. Three things we'll talk about, uh, and then in between you can ask any question whatever you want to ask, right? So uh, so if we talk about this drug addiction, then it is a chronic problem actually. So when you starts with any drug or alcohol, it is very difficult to leave it, right? So it is a chronic disease and it affects your brain. आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, यानी आपकी जो बायोलॉजी है या ब्रेन जो है उसको अफेक्ट करता है. एंड एज वेल एज लाइक व्हेन योर ब्रेन इज अफेक्टेड, सो आपका जो ऑक्यूपेशनल एरिया है, फैमिली रिलेशनशिप्स है और फाइनेंशियल्स हैं, और एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय दैट थिंग. एंड today, this is the biggest problem, not only in India, in each and every country. Like we know that thing. Like पूरा का पूरा इकोनॉमी लोगों का उस पे बेस्ड है, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं. एंड एवरी डे आपको कोई ना कोई एक न्यूज सुनने को मिलती है कि अभी मैं कल ही न्यूज सुन रहा था, आई थिंक. सो देयर वाज ए न्यूज कि आपका जो कि कितने मुंबई में आई थिंक 1000 करोड़ का कुछ ड्रग्स पकड़ा गया. एंड देयर इज सम लाइक 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपीज ड्रग इज लाइक सीज एट ग्रेटर नोएडा. सो इस तरह के न्यूज आप डेली से, तो दिस इज ए बिग 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 बिजनेस and this is a big threat to our or anybody is country. तो ये एक प्रॉब्लम है. एंड वी नो दैट countries like Afghanistan and other, their economy is based on that. So they sell all these opiate and all. And so because it is a thing that creates lot of money for them. So जो ड्रग है और अल्कोहल है, दैट अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज, राइट? तो देर आर पीपल जो एडिक्टेड नहीं होते हैं. लाइक अगर हम आप लोगों की और हम सबकी बात करें, तो देर आर इन मेनी ऑफ अस, like we have seen people like they have started taking alcohol or alcohol for like they are just a social drinker, or they take drug occasionally, right? So they are not dependent, but there are people like they become instantly, they become dependent on the drug. So there are other factors also, like your personality, your biology, because each individual is different. But yes, for sure there are certain drugs like opiate, heroin, cocaine, and so there are higher chances that you will become dependent on that, right? And once you are dependent on that, it's very difficult to leave it. So that is what it is, and it affects your health, it affects your family, it affects your country, it affects your society. So it is a kind of chronic thing that like affect us badly actually. So अब क्या डैमेज हो सकता है? जैसे मैंने बोला, हेल्थ, फैमिली, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फ्रेंडशिप, लाइक ऑल दोज थिंग्स आर अफेक्टेड विद these kind of any kind of drugs actually, not only these kind of drugs, any kind of drugs. And once you are dependent, it is very difficult to leave. The people who know these kind of like people, maybe because it is so common that
many of us may be knowing one or other person who is, you can say, are having these kind of problems. So you know that it is very difficult, even like people who are taking tobacco in any form, it is very difficult to leave. They say "Ki we will leave it, there is I'm not taking too much, all those things, but they are not able to leave it. So that is because it is highly dependent. Tobacco is highly creates high dependence in people. ठीक है? Then uh, it is not only that people are only addicted to alcohol or drugs. There are other things also. Many of us like addicted to food, addicted to gambling, addicted to shopping. These kind of things are also there. But हम उसको उतना ध्यान शायद नहीं देते हैं. Gambling and extra, which they are diagnosable disorders. So we'll, and but definitely if you are eating compulsively, so definitely there is things like they will affect your health, your financials and everything. So that kind of thing. So there are other things also we get addicted to it. So addiction is like, you can say, anything that you are not able to leave and you have a craving to get it, and you can forget everything. You are only focusing on that particular like object or shopping or gambling or drug or alcohol. So anything that you are taking it compulsively, if you will not take it, you will feel anxiety, you will feel withdrawal symptoms, that kind of, and so that kind of things are there, है ना? And जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है एडिक्शन में, किसी भी तरह के एडिक्शन में अगर हम बात करें, तो वो है after starting drug or alcohol or anything, you are not in charge of your life. That particular drug or alcohol वो आपकी लाइफ का इंचार्ज बन जाता है, बिकॉज सारी चीजें जो आपकी हैं दैट आर अराउंड दैट ओनली, कि आपकी सारी चीजें, कहीं जाना है तो मेरे पास वो ड्रग है कि नहीं है, कहीं कहीं नहीं है तो उसके लिए पैसे का इंतजाम करना, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो चोरी भी करनी पड़े. इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली सो साउंड, सो यू मे go for like people are like do that thing, they involve in crime and they like chori karna, all those things are very common in these people. So you are not in charge of your life. Now your drug or your like object of जो भी आपका एडिक्शन का है, that is the in charge of your life. So that happens, so that we have to understand, because this is very important. If you will not understand it, you cannot educate others. And it is not a problem जो किसी एक सोसाइटी का है, सारी सोसाइटी, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस सोसाइटीज, दिस इज द प्रॉब्लम. अगर आपको पता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ है, चाहे वो ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी है, एंड लाइक स्टेट्स लाइक पंजाब, they are highly affected, and there are other states like north east के बहुत सारे states हैं वो बहुत सारा जो, because there are like there are also like there are a lot of terrorism, and the group of like these groups are dependent on the income from drugs and all, so they promote it, and the younger people, when they get involved in, they uh, like you can say उनके लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना? तो अब ऐसा नहीं है कि, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, है ना? तो एडिक्शन की तरफ कौन से लोग जा सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज, कई बार हमें ये होता है कि ये सिर्फ हैबिट है, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट ओनली हैबिट. देयर आर पीपल जो ज्यादा, जिनके चांसेस है टू गो इनटू द ड्रग एडिक्शंस और एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. नंबर वन, जिनकी फैमिली में है. इफ देर आर पीपल हु आर एडिक्टेड, राइट, सो उनका चांसेस ज्यादा है कि वो like any other disease, and that is why, and it is a disease. So अगर किसी की फैमिली में लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उस फैमिली के बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा हैं, या उस फैमिली में ज्यादा चांसेस हैं कि लोग टेंडेंसीज हैं कि उनका होगा. एंड
देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है एंड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर यू हैव, तब लोगों को उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को ऐसा करने में या ड्रग एडिक्शन में जाने में चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, आज की डेट में और देखा जाता है कि जो पीयर प्रेशर है, कि ग्रुप के प्रेशर की वजह से, कि यू आर इन ए स्कूल एंड पीपल आर टेकिंग ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल, बियर, गांजा एंड देन वीड जिसको हम बोलते हैं, हसीस, कोकीन, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग इन दैट ग्रुप, you are out of that group. And teen age is the place or age जहां पे क्या होता है कि यू ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ सम ग्रुप, है ना। तो अगर उस ग्रुप का आप पार्ट नहीं होते हैं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। सो to that creates the peer pressure. So in that peer pressure people starts, and sadly there is a like role of media also, you can say कि there is a lot of you can say जब से ये OTT स्टार्ट हुआ है, सो उस पे इतने ज्यादा सेंक्शंस और वो सारी चीजें नहीं होती, तो यू विल सी लॉट ऑफ लाइक वेब सीरीज एंड ऑल, आई कैन से द मोस्ट ऑफ देम, they are they only show these contents only, okay, drugs, alcohol, and you can say like sex, all those kind of things they are showing up, and many times and most of the times unnecessarily where it is not required, right? So that kind of things at least I have seen, and maybe your experience is similar because that is there. And now we are coming to how it starts, कैसे शुरू होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं दूसरे लोग सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, तो लेट्स ट्राई एक्सपेरिमेंट विद दैट। सो व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद दैट, है ना, तो जस्ट टू एंजॉय और जस्ट टू चेक इट कि हाउ इट इज, so you enjoy, you start with it. So first stage is like experimenting with that drug, right? And then gradually you start using with your friends, and then you start using more and more, and then you become dependent on that, right? So that kind of thing जो है वो होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्यूरियस होते हो आप, कि एक्सपेरिमेंट जब करते हो क्यूरियस होते हो कि क्या करते हैं, क्या देखते हैं, कैसा होता है, लोग कैसे एंजॉय करते हैं, क्या चीजें होती हैं, एंड देन you have a doubt, sometimes you feel that it is good to take drug, at least once I can take it, and next point you will think कि नहीं नहीं, it is not a good thing, we should not take it, है ना। और दूसरा क्या है, यू फील हाई, आपको मजा आता है, अच्छा फील होता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर ब्रेन, एंड जहां पे आपका रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जब आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, जो ब्रेन का पार्ट एक्टिव होता है वही पार्ट ड्रग के यूज से भी होता है, ठीक है। तो यू फील हाई, है ना। so these things, this happens at your stage 1, and when it comes to the stage 2, अगर हम कहें, तो you start thinking more about drug, you try to find out the opportunities जहां पे आप ड्रग्स ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें दिक्कत होना शुरू होती है, एंड क्योंकि क्या होता है, जो सारे लोग तो लेंगे नहीं, तो आइदर यू टेक इट विद द पीपल हु आर यूज्ड टू और डिपेंडेंट ऑन दिस, और यू टेक इट अलोन, है ना। तो यूजुअली ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस इज दे स्टार्ट टेकिंग इट अलोन। पहले तो आपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी या ड्रिंक किया, एंड देन ग्रेजुअली व्हेन लाइक you want to feel high, and then you again take it alone, because then you started taking alone, it becomes independent activity, and but at the same time in this stage you also feel that you have control, you can control yourself. So अगर कोई कहता है कि नहीं आप ड्रिंक मत किया करो या सिगरेट मत पियो, so you think नहीं नहीं, you आपका कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, and these statements are very common, and uh, and still they feel high. In stage 3 में अगर हम जाते हैं, तो they seek out high, they again try to find out, जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हाई फीलिंग को ढूंढना शुरू करते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे यूजेस बढ़ते जाते हैं, सपोज पहले आपको एक सिगरेट या एक पैग और एक डोज में मजा आता था, वो हाई उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो आपकी बॉडी उसमें यूज टू होना शुरू हो जाती है, एंड देन आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है कि नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल और सिगरेट, वॉट एवर यू आर यूजिंग, है ना। और एट द सेम टाइम यू थिंक है ठीक है जो भी होता है, जो लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये हर्ट नहीं करता, मुझे परेशान नहीं करेगा, ये मुझको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और बाकी लोग भी तो यूज करते हैं तो मैं भी यूज करता हूँ, क्या इसमें नया है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग कम्स इन, राइट। तो ये एंड देन और आगे जब एक स्टेज अब और आगे आप बढ़ते हो तो क्या होता है, अब आपको मजा आना बंद हो जाता है, हाई जो फीलिंग आती है वो आना बंद हो जाता है। और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मीन्स आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि अगर आप ड्रग नहीं लोगे तो क्या होगा, आपको सिकनेस फील होगी, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है। सो नाउ जिसको हम विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं है या क्रेविंग बोलते हैं, नाउ यू हैव टू स्टॉप इट, टू स्टॉप इट यू टेक द ड्रग, and drug becomes like your like center of life. So now whatever it is, you will take the drug because you have to avoid those symptoms, because if you will not take it you will feel uh, like sick. So to function normally, you have to take the drug. So this is how we become addicted to the drug, right? So this is the process. We start, we experiment, we feel high, and then we start taking it alone, and then gradually, like we try to seek more high because our body is getting used to it, and then we become dependent on it. And then to avoid that withdrawal symptom, that sickness we feel, where if we not take that drug, तो क्या होगा, तो that starts becoming worse, and only thing that remains in your life, that is that drug or alcohol, whatever you are taking. So this is how you get involved in it, right? And then अगर हम बात करें कि कितने तरह के ड्रग्स हो सकते हैं, देखो ड्रग्स का एक तो ये समझना हमें जरूरी है कि ड्रग्स दैट वी आर यूजिंग, that people use, that you can divide it usually into three types, because they work on your brain, right? तो एक तो होता है जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, जिसको हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, सो दैट उसका एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिनको हम स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। एंड देयर आर ड्रग्स जो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे, जिनको हम डिप्रेसेंट बोलते हैं, राइट। एंड देयर आर ड्रग्स जो आपके अंदर लाइक हेलुसिनेशंस, और उनको हेलुसिनेंट्स बोलते हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनको डिवीजन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो आते हैं, आपकी चीजों को, आपकी हार्ट बीट और इन सारी एक्टिविटीज को जो होता है इंक्रीज कर देते हैं, कुछ सप्रेस कर देते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। सो ब्रॉडली यू कैन डिवाइड ड्रग्स इन these categories, right? एंड अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई इससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को कुछ कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या इफेक्ट्स आते हैं इसके, तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे एपेटाइट कम होना, वेट लॉस भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों में होता है। देन हेडेक्स वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी होना, बहुत अगर ड्रग्स नहीं मिलता है वैसे तो एंग्जाइटी के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एंड मूड चेंजेस भी होते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे हसीस एंड दीज काइंड ऑफ ड्रग्स, लाइक गांजा जिसको हम बोलते हैं, एंड चरस, तो they change your like mood, and there are high possibility like people get into some mood disorder or some severe psychiatric problem. And once the problem is there, even if you will stop it, so
maybe that problem will not go. You are permanently that is damaged. So प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जिनको हम बात करें, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, चेस्ट पेन होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, एंड कोल्ड लाइक फिंगर्स, एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग हो सकता है, डिफिकल्टी लाइक इन कंसंट्रेशन, बॉडी टेम्परेचर का ऊपर नीचे जाना, ये भी चांसेस जो होते हैं. So drugs they are chemicals. Now they like chemicals like जो आप चरस और ये सारी चीजें बोलते हैं, they from like plant based, and there are drugs like जो directly आपका chemicals होते हैं. तो क्या होता है, if you are taking any drug or chemical and that goes into your body, and so that will affect your brain, and they may cause permanent damage also, right? तो बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स हैं और केमिकल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं. ब्रॉडली अगर आप डिवाइड करो तो एक तो है जो लीगल तरीके से अवेलेबल है, लाइक टोबैको, सिगरेट्स, पान मसाला, ऑल दोस थिंग्स. And there are drugs that are, and alcohol, and there are drugs that are not legally available actually. तो लीगली अवेलेबल जो ड्रग्स नहीं है उनमें जैसे कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो इलीगली अवेलेबल है. और प्रॉब्लम क्या होती है कि अल्कोहल एंड ऑल which is legally available, you can monitor them, government can monitor them कि कितना अल्कोहल है, 20%, 30%, 40%, whatever it is. But in illegal drugs, you don't know from where they are coming, what kind of chemicals they are, how they can like affect you. Like maybe you have seen lot of like cases in our country, basically in the in states जहाँ पे जो ड्राई स्टेट्स हैं जहाँ पे इट इज नॉट अलाउड टू सेल अल्कोहल. सो व्हाट दे डू इज they make it and illegally they sell it. There is a parallel economy actually there. So in that you can hear a lot of news कि लोगों ने जहरीली शराब पी ली and they उनकी डेथ हो गई. That kind of things like am I audible? Okay. So because I thought, because there was some error was showing on my laptop, so that is why I asked, yeah, am I audible or not? Okay. So any question till now you want to ask? Anyone? Any question? You can ask anytime. You can ask any question. No question. ठीक है. So हम लोग आगे बढ़ते हैं. So अब ये आपको कैसे, जो एडिक्शन है किस तरीके से आपको फंसा लेता है, कैसे इंडिविजुअल उसके अंदर फंस जाता है. तो एक तो ये होता है कि लीगल केसेस हो जाते हैं. अगर आप चोरी और इन सारी चीजों में, ड्रग पैडलिंग, इन चीजों में, तो इसमें लीगल हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इंजरीज हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होना शुरू हो जाते हैं, तो जो डेथ्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम इनका वीक हो जाता है, एंड दे आर हाई susceptibility of getting infected, and cardiovascular condition की प्रॉब्लम में हो जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनको सीजर्स यानी दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रोक्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल लाइक बॉडी में बहुत सारे ग्लोबल चेंजेस हो जाते हैं, एंड चेंजेस आते हैं बॉडी, क्योंकि यू आर इंजेक्टिंग सम और sending some chemicals to your body, तो body reacts to it, so that can harm you in different ways, right? तो अब क्या होता है कि आपको ड्रग्स अल्कोहल लेने में ही मजा आने लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर काम करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी छूटती चली जाती हैं.
एंड और प्रॉब्लम जो होती है कि आप इम्पल्सिव ज्यादा हो जाते हैं, आप एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पैरानोइया कि आप शक करना शुरू कर सकते हैं, हेलुसिनेशंस होना शुरू कि आप कुछ चीजें नहीं है आपको दिखा। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे लाइक इस तरह के जो बेसिकली जो हेरोइन एंड ऑल लेते हैं, दे समटाइम यू विल फाइंड देम ऑन नियर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एंड ऑल, सो यू विल से दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ ओनली, तो दैट इज हेलुसिनेशन, है ना। उनका सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। तो ये मतलब पूरी तरीके से हाईजैक कर लेती है उनकी लाइफ को। एंड इन केस ऑफ लाइक फीमेल्स व्हाट हैपेंस इज लाइक अगर दे आर टेकिंग एल्कोहल एंड ऑल, तो अब उससे और ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इफ दे आर प्रेग्नेंट, so we call it alcohol fetal syndrome, एक होता है, you can read about it. So and similarly in males and females both, if they are taking drugs and all, so there are high chances they are involved in like you can say casual sex and all, so that is also there. So because of that HIV AIDS also increases, and most of the cases like बहुत ज्यादा जो तेजी से बढ़ता है cases में क्या होता है, जो इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, मॉर्फिन के इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दे डोंट हैव दैट मच मनी, सो दे शेयर सिरिंजेस एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन casual sex, and they are also going for the commercial sex workers. So what happens is जहाँ पे high chances हैं to develop HIV and AIDS, so when they inject that thing in their body, so there are high chances they will get infected, and this is the like statistics. And when they get infected, suppose one male is infected, when that person will go to the home and they will have like relationship with his like wife, so they will also get affected, and then their children. तो ये HIV AIDS का जो भी प्रॉब्लम है वो भी बहुत बड़ा है, and there are a lot of people like agencies, they are working on that. There is agencies like government agencies working with like UNDP and like WHO. So what they do is to minimize that injecting drug, they give them that drug in the tablet form, so that प्रॉब्लम कम रहे। तो जो ये सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखते हैं इंडिया में, वहां पे HIV AIDS सेंटर्स हैं, सो वहां पे ये काम भी होता है, दे प्रोवाइड मेडिसिन टू डोज, मेडिसिन मींस दैट ड्रग इन ए टैबलेट फॉर्म, सो दे डोंट टेक दैट थिंग इंजेक्टेबल्स, सो दैट हैपेंस, and it is increasing day by day. It is very dangerous actually when someone is taking drugs and all, right? So not only for them, other लोगों के लिए। So as a psychologist, as a individual, as a layman, we have responsibility. We have a lot of responsibility to you can say to handle these kind of things, to make aware other people, to help them to get out of these kind of situation. So that is very important if we want कि लोग इससे निकले, because that is our responsibility as a psychologist as well as a human being. तो important क्या है? Because the people who are into drug and all, they gradually lose their families, family friends, and उनका सोशल नेटवर्क खत्म हो जाता है। जो सोबर है उन्हीं लोगों के साथ में उठना बैठना उनका शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज वी हेल्प देम, वी डोंट डिस्कार्ड देम, ट्राई टू लाइक, एंड उनको हम सजेस्ट भी करें कि वो बेहतर जो उनके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं उनके साथ उठना बैठना और सारी चीजें जितना भी इंक्रीज कर सकते हैं करें। एंड बिकॉज वो अगर हम नहीं करेंगे, जो ओल्ड पीपल हैं हु आर टेकिंग ड्रग्स, with them like we are sitting and talking to and enjoying, so उनके साथ जब तक बैठेंगे it is very difficult to like handle, and I try to find out some other ways to get high, like sports हो सकता है, movies, but whatever like hobbies they have, that you can help them to like find out those activities and all. And most importantly, they need treatment. That is why we have you can say we call them disorder or disease. There are like, now I'll talk, any question if you have you can ask.
Deepti, Divyansi, Dr. Natasha, Khageshwar, and Tusagiri Goswami and Yukti. If you have any question, you can just write it down, or you can just switch on your mic and ask. Anyone have any question? You can just switch on your mic. Anyone? No. Okay. So I'll continue further. So there are, like, it is a disorder. So we have to understand it, and we have to, you can say, we have to like deal with it. So there are a lot of things, because जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, so उसमें अगर हम देखते हैं तो इट इज ए मल्टी डायमेंशनल थिंग. मल्टी डायमेंशनल मीन्स लाइक बायोलॉजी अफेक्ट हो रही है, आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है, और आपका सोशल चीजें भी अफेक्ट हो रही. तो इट इन्वॉल्व्स ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली. सो द ट्रीटमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि बायोलॉजिकल लेवल पे ट्रीटमेंट होगा, साइकोलॉजिकल लेवल पर होगा, एंड सोशल लेवल पे, जहां पे, तो इसीलिए एक टीम ऑफ प्रोफेशनल दे कैन हेल्प. तो साइकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, एज वेल एज लाइक बायोलॉजिकल लेवल पे अगर कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट, एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइक फिजिकल सिस्टम, एनी ऑर्गेनिक सिस्टम, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ती है हमें ट्रीटमेंट का. सो इट इज ए होलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच. But psychological treatment is most important thing, because if you are not motivated to leave, if you are not able to like understand things, because drugs also affect your understanding, your perception, understanding everything. So if you are not ready, if you are not able to understand this, and you are not motivated, this is very difficult to leave the drug. So our work, or as a psychologist, like the work is to make them motivated. Or motivation means it is not like giving something like घर वाले लोग करते हैं कि ठीक है तुम छोड़ दो तो तुम्हें ये दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. That is not the thing. Internally motivated, अंदर से वो आना चाहिए कि वो छोड़ना चाहते हैं इसलिए छोड़ रहे, ना कि कोई उनको कुछ मिल रहा है इसकी वजह से वो छोड़ेंगे. तो that is important. And first thing is like detox करना, कि बॉडी में ड्रग्स जाना बंद हो, willingness हो. And there are organizations, different organizations also, like जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, आप हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, नार्कोटिक एनोनिमस, अल्कोहल एनोनिमस, यानी AA मीटिंग्स, NA मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे जो लोग एडिक्ट्स हैं, they can only join, and in some meetings of family members can also join. So they motivate them, they show them ki what is the effect of that, and they try, and that is the way, and that is basically based on a program, we call it 12-step programs. You can read about that thing. The 12-step program is like a spiritual based program है, spirituality based program है, जो इन लोगों को help करता है to seek help and to remain sober. It is a wide like group, so anybody from anywhere can join this group. That helps. And as a professional, if you want like treatment, so if there is some medical problem, definitely you have to approach the doctor. And if there is some neurological problem, the neurologist will treat, like strokes and all, or some seizures and all, so that will be treated. And next thing is like psychological treatment. That is most important. One of the most important thing is your psychological treatment. Because until unless your psychology will not change, there is no permanent change in your like drug using. So as a psychologist, there is a lot of like great role. There is a role that you can deal with. So
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, राइट? तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो कई तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो ज्यादातर केसेस में जो बहुत ही हाईली डिपेंडेंट हैं, बहुत डिपेंडेंट उसके ऊपर हैं, सो यूजुअली जैसे कोकीन है, ड्रग्स हैं, एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, सीवियर अल्कोहलिक्स हैं, मोस्टली दे आर ट्रीटेड एज ए इन पेशेंट. They get admitted and then get treated. Understand one thing, it is not like कि एक बार छोड़ दिया एक हफ्ते के लिए and then they are sober. They will get relapse. Most of them will get relapse. एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल में, साल भर भी कई बार वो छोड़ देते हैं, but again they get into it. For example, I will tell you, nowadays like Navratri is coming, right? And similarly, there are other, like in Muslims there is Ramzan, like we know that. So people who are highly addicted to drugs and alcohol, they leave it in that period, 1 week or 1 month, and then again they get into that. So it is not easy to come out of these things until unless you will not understand, you will not work with your client or person or family member जो भी है. तो ट्रीटमेंट जो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उसमें, और ज्यादातर जो ये इन पेशेंट्स वाले लोग हैं, they follow 12 step programs, or there is another program that we call जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी यूज हम लोग करते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटी, टीसी बोलते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटी, जहाँ पे सारे क्लाइंट्स अपने आप से ही सारा कुछ करते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है. And then there is a outpatient treatment that is well researched and all. We call it MET, motivational enhancement therapy, that you can do. The like beauty of that is like you can work with your client in outpatient also whenever they are coming, and anybody can use it. Like either you are a doctor or psychologist or in some other professional where you are like meeting these kind of people or your family members, you can work with them. Like, and MET is like motivational enhancement therapy. It is like based on like internal motivation, okay, how to develop internally motivated client, how to develop a motivation in that client so that they can seek treatment and they can leave the drug, and they can if required they can get admitted and all. So, and other thing with this motivational enhancement therapy is एक तो बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज like it can be used with other therapies, medical therapies, like they are on medication or they are using 12-step programs, whatever they are doing, you can use this therapy with them. You can start with them, and how you will sympathize with them, how you will work with them, that is a long thing that you have to learn. So that is it. So work and it understand, we have to handle the family members also, because there are some family, many times there are some family dysfunctions also. तो फैमिली को एजुकेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज ड्रग, एंड बिकॉज समटाइम यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम ट्रीटमेंट, फ्रॉम एनी ट्रीटमेंट, अगर हम देखें तो किस तरह का हमारा होता है. हमारा यही तो होता है कि भाई हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, वी आर गेटिंग एडमिटेड, वी विल बी ओके. बट इन दिस केस when we talk about addiction thing, it is not like that. It is not like कि आप ठीक हो जाएंगे immediately. Maybe आपने 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया, 3 months का ट्रीटमेंट लिया, यूजुअली रिकमेंडेड 3 months का इन पेशेंट ट्रीटमेंट. अगर इन पेशेंट के लिए आप जा रहे हैं तो आप जाएं, और 3 months के बाद जब बाहर आते हैं, हो सकता है 1 हफ्ते ठीक रहे, या 2 हफ्ते ठीक रहे, या 3 महीने ठीक रहे, अगेन यू आर इनटू दैट. तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्टर्स पेशेंट इज गेटिंग रिलैप्स, पर्सन इज गेटिंग रिलैप्स, why they get it, कौन सी चीजें हैं जिनमें हम improve कर सकते हैं so that further relapses ना हो. So again they come to the treatment and we analyze that thing, and they get treatment, and then again they go back, and again if it happens, so it may take 3, 4, 5 times. So that we have to speak or talk about with your client as well as your family members of the client, because if you will not talk about it,
what happens is there will be hopelessness. They will say कि treatment का तो कोई फायदा होता नहीं है, तो treatment कराने की जरूरत क्या है? So we should not treat that kind, but it is not right. This is the thing that takes time. We have to. So all those things we have to understand, and on that ground only we have to educate or help people also. Like if suppose you are saying to your family members or relatives कि इस treatment होता है, तो you educate them. Or you are treating with client, then you have to educate with them, and you have to take care of all the background and everything of the client, right? So because social culture importance is also there, because if you see कि there are cultures जहाँ पे allowed है, like I know because I'm in Delhi and NCR. So you can see if you go to Haryana, or there are some other states also, when you specifically we talk about Haryana, so there is a, like, in every house you will get the hookah, that is tobacco, and people are getting addicted to it. And so similarly, if you go to the Punjab, so there are culture, okay, they take alcohol in the evening, most of them, like, yeah, and they invite you also for the same. So there are cultural factors also. So these are the things that we have to take care of, understand the culture, understand the religion, and understand, like in if we talk about Muslims, so they like alcohol is not allowed in that, so they may be dependent on some drugs or something else. Or similarly in Sikh community, they are not allowed to smoke, so they, or tobacco, so they are more dependent on alcohol. So cultural factors, availability, and your personality, your family dynamics, your family genetics, everything is important. So we have to understand this, and then only we can properly treat and understand the client. So this was about drug addiction. If you have any question, any query, that is most welcome. You can ask, you can write, or you can just open your mic and you will ask your questions. Because till now I didn't add any question from you people. So anything, any question from your side? So you can just type in also. Hello, I'm audible, sir? हाँ, बोलिए. Yeah. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर, motivational enhancement therapy only provided by clinical psychologist or counselor or other person? Motivational. Okay, so these counseling services can be provided by psychologists, clinical psychologists, counselors, social workers, psychiatric nurses. So if they are trained, they can provide it. Right? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Any other question from anyone? You can just write it down, or you can ask. And one more thing I want to add on. We also run a course. We call it de-addiction counseling course, drug and alcohol de-addiction counseling. It is a 1-month training program where we take like twice a week classes, and specifically we focus on motivational enhancement therapy, because that is you can do in inpatient and with outpatient also. And we also talk about basic counseling skills that you can use with your like client, specifically drug addiction client, because sometimes they are very argumentative, sometimes they are very aggressive, and so that kind of thing also happens. So we talk about, we learn that also. So it is around like 8 hours program, like twice a week for 1 month. So that we train like the people who are working with these kind of or intend to work, or they are into rehab. So a lot of people like that kind of people, they join. So if you wish, you can check the details on our website also.